A lot of reports have been coming that there are problems in the PLA, and we need to look at it closely. And that's why I said now, I'll do a relook at PLA, and a lot of people have spoken a lot of it. But before that, like I said, I need more people to subscribe to Gunnershot, because these days I see the number of people subscribing to Gunnershot has gone down. So if you like, please press that like button and bell icon and all that. But if you do like this video, please subscribe to Gunnershot. But let me start again. 15-20 days back, or maybe a little more than that, I did this analysis of PLA weaknesses. It was a long show. बहुत लंबा program था, हमने किया था, और it caught lot of views and lot of हमें काफी feedback मिला है. और उससे पहले 1-2 महीने पहले मैंने ये भी निकाला है, A Peek into Everyday China, The Character of PLA. ये जो तीसरा वीडियो है PLA के बारे में, 3 सिर्फ PLA के बारे में पिछले 1-1.5 महीने में हमने निकाला है. ये पहले जो वीडियो भी आप कृपया देखिए, उनका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ये सब देखने के लिए. ओके, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे. फर्स्ट, ये निकला न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, Z rebuilt the military to his liking. Now a shake-up threatens his image. So the first thing is there is a shake-up. हम सबको पता है, बहुत लोगों ने इसके ऊपर विश्लेषण किया. मेरे दोस्त राजीव नारायणन ने भी विश्लेषण किया है. मैं आज थोड़ा अलग किस्म का विश्लेषण करूंगा. परिणाम एक ही होगा, बट थोड़ा मेरा नजरिया थोड़ा अलग है. So the first thing about this article which suggests is Xi Jinping handpicked the Central Military Commission and handpicked the Politburo and the Standing Committee of the Politburo. 2 of his handpicks, Qin Gang and Li Shangfu, right? They were part of the Central Military Commission, Politburo Standing Committee, and they were appointed as state councillors. Both of them are under shadow, which means Xi's image is under shadow. That's the bigger picture one has to understand in this whole story. इसने जो खुद चुन के अक्टूबर में 20 पार्टी कांग्रेस में सब बोल रहे थे कि इसने हर एक आदमी को लॉयल्टी की वजह से, वफादारी का वजह से इनको नियुक्त किया है. और पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में सिर्फ 5 होते हैं, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 7 होते हैं, स्टेट काउंसलर भी 5 होते हैं, और इस 5 स्टेट काउंसलर में 2 अंडर शेडो. सबको पता है चाइना's मिसिंग मिनिस्टर, किन गैंग और चिन गैंग, जो भी है इसका नाम, गॉन, बट जी जिनपिंग लुक वीकर टू. ये अल जजीरा का ओपिनियन है. मैं अल जजीरा ले रहा हूं क्योंकि हाल ही में चाइना did the deal between, in the Middle East, between Iran and Saudi Arabia. So Al Jazeera would be towards Xi Jinping, पर वो तो है ही नहीं, और ये बोल रहा है कि Xi Jinping looks weaker too. ये तो 3 महीने के पहले बात है. अभी क्या है? And then they were gone. Then they were gone is a novel, a mystery novel of Agatha Christie. A very interesting novel if you read it. I read it long back जब हम स्कूल में थे. Then they were gone कि मतलब एक गिर गए थे और एक दिन ऐसा रहा कोई नहीं रहा. And now defense minister goes missing. 29th August. आज क्या है? 3 हफ्ता out of action. Okay, ये उसके साथ साथ ये एक ट्वीट निकला. मेरे को ये नहीं पता कि ये what is the veracity of this tweet, but it has come out. इसमें काफी Chinese action है, so I think something is there. Have a look at it closely. It's of resonant news. He says new arrests in China
Former Chinese journalists report that many defense officials have been arrested in China. Oh, इन्होंने बोला चेयरमैन ऑफ चाइना ऑर्डिनेंस ग्रुप, चेयरमैन ऑफ चाइना एयरस्पेस एंड साइंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, जनरल मैनेजर ऑफ चाइना जो भी है वो पूरा इसका चाइनीज वाले में से भी है. और कोई Shaolin, Lanjuan, he says many important military and enterprise officials have been arrested by the Central Commission for Discipline Inspection during the attack on Taiwan, he says, but it is rare it is happening. Every chairman and general manager above and below will be implicated in nepotism. There may be an extremely cruel purge of military enterprise. तो ये है कहानी. कुछ हो रहा है क्योंकि एक फॉरेन मिनिस्टर को निकाल दिया गया, एक डिफेंस मिनिस्टर को निकाल दिया गया, ये ऐसे खबर आ रहे हैं और उसके साथ साथ भी और भी हुए हैं. अगर आप इसके हिस्ट्री में देखोगे, 2014 से ही ले रहा हूँ, इनका पहले का हिस्ट्री भी ऐसे ही है कि जब भी किसी के ऊपर शक होता है तो उसको निकाल दिया जाता है. डेंग जियाओपिंग also did it, Mao also did it, Jiang Zemin did it and Hu Jintao did it. But Xi Jinping is doing more. Since 2014, many PLA officers have been purged. First on the chopping block were two highest ranking military commanders, vice chairman of the CMC, both generals, Zhu Kaihu and Go Boxing. चलो Go Boxing हो गया उसका. General Zhu, he was purged in 2014. He died in agony 1 year later. Go is now serving a life sentence in a communist prison. ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा पीछे नहीं है. 2014. There was a time when I was serving still, right? My contemporary probably. इंडिया में हूँ तो आपको लेक्चर कर रहा हूँ. अगर चाइना में होता तो सलाखें गिन रहे होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये है कहानी. वक्त वक्त की बात है. तो इसका मतलब ये है इंडिया में रहना अच्छा है, जिंदा तो रहोगे. Many senior PLA officers promoted during Zhu and Guo's tenure, including PLA's highest ranking military generals, were purged. So at that time, 2014, a lot of people have been safa ho gaya. Leadership change. That's the crux of the whole thing, is leadership change. Xi's military purge is so thorough that the entire senior military staff working under his predecessor, General Secretary Hu Jintao, has been purged. Jitne bhi. So you have a new set of military general, new set of military staff. In 2017, abhi 14 ke baad 17, two commanders who had been elevated by Mr. Xi to the Central Military Commission, Zhang Yang and Feng Fui, were ousted over corruption allegations. Zhang took his own life and Fang was imprisoned. Zhang और Fang दोनों गए. तो हर दूसरा तीसरा साल खत्म होता जाता है ये. So this is a story. ये कोई नया नहीं है जो अभी हो रहा है, पर इसका जो अभी जो हो रहा है वो थोड़ा लंबा चौड़ा है और इसका आकार a little more dangerous. Why it's dangerous मैं आगे बताऊंगा. 2 महीने पहले ये निकला, Wang Shojin, bodyguard to China's top leaders, dies of unknown illness, age 67. वो पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया. ठीक, ये जी जिनपिंग का पर्सनल बॉडीगार्ड था. ये 3 महीना इस पता ही नहीं, लापता हो गया. कुछ एक दिन लापता हो गया और 3 महीने के बाद ये बताते हैं कि भाई ये मर गया. कैसे मरा, कब मरा, क्या हुआ, किसी को नहीं पता, बट डेड ही इज. ओके, नाउ इसका प्रीकर्सर है चाइनीज एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटर्स टारगेट टॉप PLA रॉकेट फोर्स जनरल्स. ठीक है, इसमें 3 है. इसके बारे में भी हमने बात किया है एक बार एक वीडियो में जनरल राजीव नारायण के साथ, और मेरे ख्याल में पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात किया. ली यू चाओ, जैंग जुंग जोंग और ली गोंगहिन जो भी है, इसमें एक one chap committed suicide, the 2 are under thing.
Now, what is the connect between this PLA thing and Li Shangfu? Li Shangfu is also is an aerospace engineer connected with his rocket forces. So the rocket forces are under thing. And the rumor of Qin Gang, जो इनका foreign minister था, that was a CIA operation. And there's a leak. Then there's corruption. Then you're looking at the ordnance factories going fat. Then their entire military complex is under purge. Then, of course, the fact that every fellow is new. I'm leading to something. This came out almost around the same time. The defense ministry spokesman who said, we will crack down on every corrupt official. इन्होंने बड़ा क्लियर बोला. बट इस आर्टिकल में क्या हुआ? China's defense ministry vowed to crack down on every corrupt official. When asked about a reshuffle of senior rocket force commanders and the whereabouts of defense minister Wei Fenghe, who has not been seen of months. 2-3 महीने से ये गायब है. ये है previous defense minister और अभी का defense minister भी नया वाला out. So you have a situation where the previous defense minister and the current defense minister are both out. The set of generals before that in 2007 are out. They're all been purged. The new rocket force commanders are all purged. And there's a purge on all ये इनके जो military contractors हैं और chairman हैं, corporations हैं, जैसे हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन वगैरह निकाल दिया गया उस इक्विवेलेंट. Yeah, he's not been seen for 2 weeks. We all know that. He's been replaced by a naval officer who has no clue about the rocket force or anything. Okay. Before this, what is the importance of the PLA rocket force in their system? ये आपको समझना important है. The PLA rocket force was supposed to have this DF-21 जो कैरियर ब्रेकर था कि भाई हमारे पास ये क्या एयरक्राफ्ट नहीं है, कैरियर नहीं है, पर हमारे पास वो मिसाइल है जो इट विल ब्रेक यूएसए's कैरियर्स. One. Number two, we don't have bases in the Indian Ocean region or in Pacific or wherever, but we have overseas strategic strong points. What is the strategic strong points? ये वो जगह है, ये ports हैं जो चाइना के corporations have taken over to run these ports. There are 105 ports all over the world. इसके बारे में मैं अलग वीडियो जब टाइम मिलेगा मैं निकालूंगा. तो 105 पोर्ट्स चाइना के कॉन्ट्रैक्टर्स चलाते हैं. तो इनका क्या है कि ये जो पोर्ट्स हैं they become the basis where PLA can operate from, and the long range PLA rocket force gives the firepower cover. So इनका जो सोच है कि चाहे कहीं भी हो हमारे पास हमारा PLA रॉकेट फोर्स है जो विश्व में कहीं भी हमारा नाव हमारा नेवी ऑपरेट करे उसको हम कवर करेंगे. और जो the lack of bases and the lack of aircraft carriers can be made up by the PLA rocket force. If this force is under question mark, जो अभी आ गया है, then the efficacy of China's longer strategy is at question. Understand this. आप PLA रॉकेट फोर्स के बारे में वेबसाइट में जाके टाइप कीजिए और आपको गोल मिलेगा पूरा दुनिया को कवर करते हुए. वो कवर जो है अभी क्वेश्चन मार्क है. खैर, यू कैन ऑल्सो से दैट ओके हमें क्या पता है कि ये फायर करेगा कि नहीं. ये तो बोल रहे हैं, हो सकता है ये सब it's all fake, and actually they are okay, and we should still be worried about it. Yeah, we should be worried about it, but look at it from Xi Jinping's point of view, and the character of this purge. Go back. I mean, the character of this purge is important.
Okay, if you see in this, the military as a whole, the top echelon of the military in 2014 and 2017 were taken off. But in this, अभी का जो चल रहा है, it is a rocket force, and the rocket force is critical to, it is critical to China's fortunes, China's long-term strategy, China's global strategy. It covers the Belt and Road problems. Earlier, if you had a problem in any Belt and Road country, you knew you had the rocket force to come. अभी doubt है. Okay, you might say no, no, they fake hai. But you look at it from their point of view. Again, I'm repeating this. He's got a doubt. Even if 10% of this is true, there's a doubt in Xi Jinping's mind, and every Tom, Dick, and Harry in China who will say, "यार, मेरा rocket force कल के दिन काम करेगा या नहीं?" Right? So there's a problem. But कहानी यहाँ नहीं रुकता. ना, कहानी आगे है. ये ना शो अभी बाकी है भाई. ये है. इसके साथ साथ Xi Jinping puts military focus back on towing Communist Party line. ये नहीं कि ये इन सबको सफा कर दिया और सब हो गया. He summoned all top brass to Beijing. And इसने पट्टी पढ़ाया है इसको. अगर आप लॉयल नहीं हो तो आप गए. PLA Delhi has been putting out articles for tight political discipline to avoid setbacks and losses. The party must command the gun. ये दोबारा बोल रहे हैं. मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला the party must command the gun. और ये पार्टी मस्ट कमांड द गन, इनका जो ये गीत है और इनका जो रीत है, ये माओ के जमाने का है. ये कभी इन्होंने, इनका हर वक्त कोशिश यही है कि पार्टी कंट्रोल्स द PLA, एंड दैट इज एट स्टेक. ओके, राइट. सो द ग्लोबल aspirations of Xi Jinping and China are at risk. Now, what is this? This is even more interesting. ये भी अभी पिछले 10-15 दिन में निकला है. इसको थोड़ा नजदीक पढ़ते हैं. China military issues unprecedented rules for top commanders' social lives in move not tried even in Mao Zedong's time. ये जो है, जो पिछले वीडियो मैंने निकाला है, एन एनालिसिस ऑफ PLA वीकनेसेस, उस वक्त भी मैंने ये स्लाइड दिखाया था. तो इसने क्या बोला है? न्यू सेट्स ऑफ रूल्स कंट्रोलिंग द सोशल एक्टिविटीज ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द PLA हैव बीन प्रोमलगेटेड. नियुक्त किया है. द रूल्स सेट आउट अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर डीलिंग विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बॉडीज एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, social organizations, media, academic and research bodies, ethnic minorities, religious groups, foreign institutions, and family members, as well as people they meet online. मतलब इनको इतना पाबंदी लगा दिया कि पूछो मत. ये इंडियन आर्मी में भी इतना पाबंदी नहीं लगाते हैं हमारे ऊपर. मेरे को पता है. हाँ, हमारे ऊपर काफी पाबंदी है. एज अ जनरल आई हैड अ लॉट ऑफ पाबंदी. मैं कभी भी यूट्यूब में आके बात नहीं कर सका. मैंने कभी ट्वीट नहीं किया. व्हाट्सएप में भी नॉर्मल कोऑर्डिनेशन मैसेज ही देता था कि भाई ठीक हो या नहीं हो. कभी डॉक्यूमेंट नहीं भेजता था. वो सब था. वो है अभी भी. नो सीनियर सर्विंग ऑफिसर विल पुट ऑल दिस आउट. बट यू सी द न्यू कोड ऑफ कॉन्डक्ट, very stringent, and what's more important, never done before even during Mao Zedong's time. The new rules, which target leading cadres of the military, would be applied to retired generals also, who are known to wield considerable influence over the younger leaders. तो ये क्या है कि ये जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है उसके पार है. जो रिटायर्ड लोग हैं मेरे जैसे, अगर मेरा इन्फ्लुएंस है, अगर मेरा चेला आज जनरल है, उसके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस तो होगा ही. मेरे ऊपर भी ये पाबंदी आ गए अभी. So there is something unusual which is happening within the PLA, and we have to realize that.
क्योंकि मैं अभी सिर्फ 2014 से लेकर अभी तक का दिखाया हूं, अगर आप पीछे देखेंगे दे आर जनरल, ओके ये बंदा ठीक नहीं है, ये पुराना जनरल सेक्रेटरी का चेला है, उसको निकाल दो, बस यहां तक था सफाई। बट ये जो हो रहा है थोड़ा अलग किस्म का है। ओके, नाउ this came out 2-3 days back. Okay, what does this say? He says China's top military brass called to front lines for field research to fix rank and file problems. ये लंबा चौड़ा इन्होंने बताया कि भाई आप यहां मत रहो, आप जाओ फ्रंट लाइन में और लोग जवानों के साथ रहो। इसका मतलब प्रॉब्लम थोड़ा और संगीन है जो हम सोचते हैं। They have been, put on the hammer. It also means that there is a gap between the rank and file and the top leadership. It also means, इसमें अगर आप ये आर्टिकल निकाले पढ़ेंगे तो निकाल के ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर रिसर्च करो, ये करो, फिक्स प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। It also means that there are actual problems with the equipment. This is the indication. Now, if you think this is not good enough, look at this. Chinese general calls for quality weapons so PLA can win any battle in complex global situations. Who's done this? He's Zhang Yuzhia. Who's Zhang Yuzhia? He's the vice chairman of the Central Military Commission, number 2. He's a 76-year-old veteran of the Vietnam time who's been brought into the Central Military Commission by Xi Jinping. ये कास्ट करके लेके आया क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है लड़ाई का 79 का, और ये वफादार है जी जिनपिंग के लिए। ये बोल रहा है आज का दिन, क्या बोल रहा है? Let's read this because this is important. It gives call on the military procurement and technological development arms to improve the quality of our weaponry. So quality of the weaponry is at stake. इसका मतलब quality of the weaponry is poor. इसीलिए ये कहानी हो रहा है। इसीलिए वो जो रेसोनेंट न्यूज का जो हमने ट्वीट दिखाया है कि इनके जो जितने इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्री के सीईओस को अरेस्ट करना वगैरह सही है, अगर वो जोड़ोगे, ली शैंगफू जोड़ोगे, प्रीवियस डिफेंस मिनिस्टर को जोड़ोगे, टॉप पीएलए रॉकेट जनरल्स को जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो घोटाला एक तरफा नहीं है। इन देयर वेपनरी इज सस्पेक्ट। They want advanced arms and better quality control. Must be the top priority for officers to protect the lives of troops in case of conflict in an increasingly challenging global environment. So he says we must do a good job in improving the quality of our weaponry so we can win any battles, strengthen our combat ability and protect the lives of our soldiers. Provide quality supplies that can meet our needs in any real battles. And struggles, deepen rectification of quality. So ये अगर आप देखोगे ये पूरा क्वालिटी 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 के ऊपर गीत है। और this whole story was based on a 2-day meeting of the residual top commanders। जब इसने ये पूरा बोला है 2 दिन इसी के ऊपर जिक्र हो रहा था। And it gets reported in South China Morning Post. So their quality is a problem. Now Xi Jinping has put a पाबंदी कि वो कहाँ किससे बात कर सकता है, नहीं कर सकता है, बहुत पाबंदी। अभी तो मेरे ख्याल में चाइना का हर जनरल सोच रहा होगा यार मैं अपने बीवी के साथ बात करूं तो कल Xi Jinping आकर पकड़ के ले जाएगा। ये हालत है इनका। ठीक, ओके, आगे भी देखते हैं। Of course, this is what Reuters said. I just put it for thing. China's military rocket force uncovers shortcomings, PLA daily report. So there are physical shortcomings being reported.
Okay, there are shortcomings being reported in the rocket force. It's just not leadership in this article. Performance. Okay, थोड़ा हटके हम बात करेंगे. Countries buy defective Chinese military equipment. Why? This is an article. This is a blog post of in Rand, well researched by a Chinese. Okay, what comes out of this? What comes out of this? Long, but I'll go through it, right? Because this will tell you it has a connection with the quality. So he says China has exported malfunctioning and defective military equipment in recent years. Now, Nigeria's military reported several technical problems with Chinese-made F-7 aircraft delivered starting in 2009. So, वहाँ एक quality का problem है. Myanmar found that the Chinese-made radar on its JF-17 aircraft has poor accuracy, and the aircraft itself lacks BVR missile and airborne interception radar. So there's a problem with Myanmar. Bangladesh reported problems with firing the ammunition loaded into its Chinese-built aircraft shortly after delivery. Quality. ये क्वालिटी सिर्फ सेकंड ग्रेड माल बाहर ही नहीं बेच रहे हैं, वो अंदर अपने आप को बेच रहे हैं. पाकिस्तान, हमारा दोस्त, the largest importer of Chinese military equipment, expressed dissatisfaction with Chinese-produced F-22P frigates, including technical issues, engine degradation, and poor overall performance. And ABA, Pakistan also found the onboard imaging device of their missile system had a defective infrared sensor and radars. So their sensors had to be discarded completely. Now, China attracts its customers for its military equipment with cut rate pricing and financing, but there are hidden costs when gear malfunctions. Now, Chinese suppliers have demonstrated little accountability for maintenance or repair. इनका ये तो पहले भी हम एक आध वीडियो में मैं बता चुका हूँ. ये सामान बेच देते हैं, उसके बाद आपकी तरफ देखते नहीं. ओके, और ये बीमारी उनके खुद के इसमें मेरे ख्याल में आ गया है अभी. So there is a problem, and the last two also I'll read out because it's of interest to all of us. China is a major player in the value arms. Value arms क्या होते हैं? जो सस्ते हथियार हैं. Value arms markets such as light training and fighter aircraft, armored personal carriers, unarmed UAVs. Such equipment meets the affordability and the minimum functionality criteria that developing countries look for to use in counter-terrorism operations and fighting rebel groups. ये खास करके अफ्रीका की बात हो रही है कि वो सस्ते हथियार ले लेते हैं जिसके कैपेबिलिटीज कम है, अनटेस्टेड है, और ये नॉर्मली ये काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और सिप्री showed a 23% decrease in China's arms exports in the 4-year period between 2013-17 and 2018-22. इनका आर्म्स सेल्स भी कम हो रहे हैं, राइट? इससे क्या मतलब है कि उनका क्वालिटी पहले कम था, अभी क्या है? अभी भी क्वालिटी उनका अंदरूनी आर्म्स में भी कम है. इससे क्या नतीजा निकलता है? कंप्लीट वेपनरी ऑफ चाइना इज सस्पेक्ट, अनटेस्टेड इन बैटल. सो मेरा सवाल यह है, इज चाइना स्ट्रांग? इज द चाइनीज मिलिट्री स्ट्रांग इनफ? हम बोलते रहे, बोल लोगे कि इसके पास वो है, ये है, वो है, बट विल इट फंक्शन टुमारो इन बैटल? इससे अच्छा है कठपुतली रख दो उधर. Now, this is of Type I times, some time back. In focus, PLA carriers unfit for war. इनमें कुछ डिफेक्ट्स हैं. 3 कैरियर तो हैं, but not all fit for war. So these things keep coming out. Of course, एक
रूमर निकला था कि एक चाइनीज सबमरीन डूब गया है, राइट? इन द लास्ट जो वीडियो हमने बात किया था, हमने 4 न्यूज के बारे में बात किया। न्यू सोल्जर्स, न्यू इक्विपमेंट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू रोल्स। You will see that video on analysis of PLA weaknesses. I've spoken of these 4. Okay. I've added, I now call it the 5 news. New soldiers, new leaders, new equipment, new organization, new roles. For those of you who didn't attend the last, video, let me explain. न्यू सोल्जर्स का मतलब क्या है कि हर वक्त इनका कॉन्स्क्रिप्शन है, और conscript soldiers serve for 2 years and get out. So there's a high turnover of soldiers at the bottom. 2 साल रहते हैं, निकल जाते हैं। अग्निवीर हमारे 4 साल रहते हैं, इनके सिर्फ 2 साल रहते हैं। दे आर हाफ अग्निवीर। अग्निवीर से भी हम ऑलरेडी डर रहे हैं, परेशान है कि क्या ये काबिल होंगे कि नहीं, इनका क्या है। एंड दीज पीपल, they are not fully trained. In 2 years, no one gets fully trained. Are being given high-tech weapon systems which are defective. They will not be able to handle it effectively during war, and they will not be able to repair them and maintain them in peacetime. Which means there's the availability of warlike equipment for PLA to fight a war is suspect. There are new leaders. इतने लीडर देखिए, आप देखिए, अगर आपके घर के अंदर या आपके ऑर्गेनाइजेशन जहां आप काम कर रहे हो, एक बॉस निकल गया, तो नया बॉस आता है, तो कितने दिन लगता है उसका अपना चाल चलन के साथ बाकी पूरा सेट करने के लिए। यहाँ तो हर 3 साल निकल रहा है। और फौज ये में ना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका कंटिन्यूटी नहीं है, तो सोच का कंटिन्यूटी होना चाहिए। और लीडर्स को अगर आप पर्च करते रहोगे, तो उनके मन के अंदर भी शंका होता है कि भाई मैं करूं ना करूं, ना करूं तो अच्छा है, करूं तो कोई मेरा सर काट देगा। डर। फिर न्यू इक्विपमेंट, नया इक्विपमेंट जो अनटेस्टेड है वो कभी काम नहीं करेगा, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उनका। न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये अच्छी बात है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड खड़ा कर लो, PLA रॉकेट फोर्स खड़ा कर लो, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स खड़ा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हर एक नया संस्था को स्टेबलाइज करने के लिए टाइम लगता है। 2-3 दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कैरियर बोर्न ऑपरेशंस के लिए 10-15 साल लगता है स्टेबलाइज करने के लिए। और यहाँ तीसरा कैरियर आ गया, इनके पास हवाई जहाज नहीं है, ये बोल रहे हैं कि पूरा दुनिया को काबू कर लो। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस डोंट परफॉर्म, एंड चाइना हैज ऑल फुल न्यू ऑर्गेनाइजेशंस टुडे। दे आर नॉट स्टेबल। New organizations with new leaders. Organizations are living beings. They're being changed. Then the new roles. 10 साल पहले, 15 साल पहले, China didn't have a role to dominate the world. इनका जो stated role क्या था? Defense of the mainland. Maybe first island chain. You see, China has 3-4 roles. You have to first defend your territorial integrity. Then you have to go to the first island chain and dominate all those areas and the South China Sea. And then you have to get hold of the Indo-Pacific and dominate the Indian Ocean region. क्योंकि एक हाथी है इधर इंडिया, उसको आपको जाने नहीं देगा। फिर जाके आप ग्लोब को डोमिनेट करो। नया रोल है, और ये हर वक्त दे वांट टू डू एवरीथिंग। और ये कहानी बनाते हैं कि हम मल्टी डोमेन करेंगे, साइबर के साथ करेंगे, कंप्यूटर के साथ करेंगे, AI के साथ करेंगे। हमने यूक्रेन में देख लिया ये सब। ऑल अदर न्यू फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर वो सीमित है। लड़ाई तो भाई
मैदान में लड़ना पड़ता है, खून वहीं बहना पड़ता है और पसीना भी वहीं. So the efficacy of Chinese military as a whole is in question. Right? Last but not the least, who's this man? He's Lin Biao. Who was Lin Biao? Lin Biao had a plot to assassinate Mao. ये माओ को उड़ाना चाहता था. और उस वक्त जब उसका जो प्लान फेल हुआ था, एक एयरक्राफ्ट में भाग गया अपना बीवी को लेके. उसका बीवी भी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थी. और जब ये भाग गया, एक एयर क्रैश हो गया मंगोलिया में और वहां मर गया ये प्रिगोजिन. प्रिगोजिन को क्या हुआ रशिया में? उसने म्यूटिनी सब तो किया. पुतिन ने उसको एक हवाई जहाज में बिठाया या खुद बैठ गया, जो भी है, उसको मरा, एयर क्रैश करा दिया, खत्म. लिन बियो को भी माओ ने किया था. पर क्या अभी उल्टा हो सकता है? हो सकता है. ये जी जिनपिंग साहब अभी जो बात निकल रहा है, हो सकता है ये सच हो या ना हो, पर मैं तो मानूंगा ये कि ब्रिक्स के बाद सीधा ये वापस बीजिंग नहीं गए. ये गए थे जिंजियांग. जिंजियांग में एक सरप्राइज विजिट किया था. अगले दिन, एक दिन बीच में ये न्यूज निकला कि ही इज लेफ्ट साउथ अफ्रीका फॉर बीजिंग, बट अगले दिन निकला आया कि ये जिंजियांग में निकला है. जिंजियांग के बाद ये बहुत लोगों बोल रहे हैं कि वो बाय ट्रेन गए वापस बीजिंग. ही डिडंट गो बाय एयर. And who tells me this? Someone from Taiwan tells me this. And a very authenticated source. So he goes from South Africa to Xinjiang, does some inspection out there, and then goes by train. And then all these rocket force fellows get hacked. Two defense ministers are gone, everything. So there is instability. So let's see how things go. I mean, to put it in perspective, let's put it in perspective. So what do we know? Right? What do we know? What we know is that the PLA rocket force is under overhaul. They don't have a defense minister. They have a problem in their Politburo. Xi Jinping has a problem in the Politburo. There's also a problem with Xi Jinping's personal security. He's worried that he might get knocked off. लास्ट ईयर अगर आपको याद है तो एक खबर उड़ा था कि कू हो गया अगेंस्ट जी जिनपिंग. और ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीट था कजाकिस्तान में, वहां से भाग के आ गया वापस एक दिन पहले. अब की बार भी ब्रिक्स में एक मीटिंग अटेंड नहीं किया. वहां कुछ हड़बड़ी चल रही थी और वहां से सीधा जिंजियांग गया. जिंजियांग से ट्रेन में गया और G20 में आया नहीं. अब ये लग रहा है कि वो बाहर जाएगा नहीं. तो उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, आपका रॉकेट फोर्स का प्रॉब्लम है, आपका रॉकेट फोर्स का एफिकेसी का प्रॉब्लम है. तो दैट्स द नेगेटिव साइड. बट व्हाट इज द अदर साइड जो हमें याद रखने वाली बात है कि एक चीज जो PLA इज क्वाइट यूज्ड टू इज गोइंग थ्रू ऑल दिस. ये सब करते रहते हैं पर लड़ते रहते हैं. ये सब, all this has not stopped PLA from posing a threat. कल के दिन भी इन्होंने 40 odd aircraft they have flown against Taiwan. They are still doing naval drills. उसमें कोई कमी नहीं है. इनका बाहर का दिखावा में कोई कमी नहीं है. तो ये करेंगे, शो ऑफ फोर्स करेंगे, क्योंकि ये कभी नहीं दिखाएंगे कि वो वीक है. पर क्या बड़ा लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे. छोटा लड़ाई जरूर. अ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट, अ फेस ऑफ. Which is the easier thing? Is it Taiwan or getting hold of a small piece of some rock in Arunachal and then using information and blowing it up that India is useless? और अगला कार्यक्रम मेरा इंडिया के बारे में होगा. वो इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि
ये पीएलए मेरे तरफ से कहीं भी जाए, कुछ भी करे, किसी को अटैक करे, किसी को कब्जा करे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को लेना देना मेरा भारत के साथ है। मेरा भारत महान। सो वी हैव टू नाउ स्टार्ट सेइंग व्हाट इनका रवैया क्या है अगेंस्ट इंडिया, और क्या एक चुटपुट में विल इट go there or not, right? I finished with my presentation. So like I said, अगर आप इस मेरा जो प्रेजेंटेशन सब कुछ आप पसंद करते हो, कृपया आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के ऊपर। आई एम सॉरी, आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ ऑडियो का। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम, खैर मैं उतना ही कर सकता हूँ। आई एम टेक्निकली चैलेंज्ड, राइट? इन दिस आई एम नॉट टू गुड एट ऑल दीज थिंग्स, and that's how it is. So I'll take